Today we are going to discuss about the factors that control the pH of a buffer solution. As we have discussed yesterday about the Henderson's-Hasselbalch equation. According to that equation, we can calculate the pH of the solutions, basically pH of the buffer solutions. So how pH of the buffer solution will be affected? There are two factors that affect the pH. The first one is the value of pKa of the acid that is used. pH value depends on pKa. And the second thing is the ratio of the concentration of the salt and acid. As we know, we have to write salt at the numerator and acid at the denominator. So the ratio of their concentration basically affect the value of the pH. Here we are taking the example of the buffer solution of acetic acid and its salt, sodium acetate. Its salt is basically the conjugate base of this acid. pKa value of this acid is 4.74. This is a pKa value of acetic acid. When acetic acid dissociate, its ionization constant, its pKa, the negative log of its ionization constant is 4.74. We are taking the concentration of the salt and acetic acid, that is 1. 1 molar concentration of its salt and 1 molar concentration of its acid. So both the concentrations are same. Due to that, 1 divided by 1 will be 1. So log 1 will be equals to 0. Log 1, if you are going to calculate it from your calculator, you can see that log 1 is equals to 0. So here you can see 0 is written instead of log 1. pKa of acetic acid is 4.74. When the concentration of salt and acid, or when the concentration of base or acid, then the pH is equals to pKa and the pOH is equals to pKb. Here we are talking about the acid. If we are going to talk about the base, then this Hasselbalch equation, Henderson's-Hasselbalch equation will be pOH is equals to pKb. As we know, pKb is the ionization constant of bases plus log salt at the numerator and base at the denominator. Base. Clear? So this is when we are dissociating the base. Next, if we are going to change the concentrations, in this example we have taken the same concentrations of salt and the acid. Instead, if we are going to take different concentrations of acid or a base, then what will happen? Let's see. In our example 1, we are going to take the concentration of the salt is 10 times. We are taking concentration of salt 10 times to acid. For example, acid is 0.1 molar. Concentration of acid is 0.1 molar and we are taking its salt 1 molar. So this salt is 10 times. 0.1 is acid and 1 molar is salt. Salt is 10 times to the acid. So put the values in equation. pH is equals to pKa plus log salt over acid. Salt having 1 molar concentration and acid having 0.1. You have to put the value simply. The pKa of dissociation of acetic acid is 4.74. Now 1 divided by 0.1, take the log of that division, that will be equals to 1. So 4.74 plus 1 will be the new pH. Here you can see. By increasing the concentration of salt 10 times, then the change in pH will be of 1 unit. pH will increase 1 unit if you are taking salt concentration 10 times higher.
Clear? When the concentration of salts and acid are same, there is no change in the pH. pH will be equals to pKa. The ionization constant of acid will be its pH. But if you are taking the concentration of salt 10 times than the concentration of the acid, then the pH value will increase 1 unit. Here you can see there is 4.74 ionization constant, the value of negative log of ionization constant of acid. By taking salt 10 times higher, then you can see here the pH value increased 1 unit. 4 to, it becomes 4 to 5. If we are going to take acid 10 times than the salt concentration is now 1 molar, and we are taking acid 1 molar. We are taking now acid 10 times larger, the amount of acid 10 times higher. So now put the values and see what will happen. Salt 0.1 molar and the acid is 1 molar. pKa, the negative log of ionization constant of acetic acid having a value 4.74. Take log of this, it will be 1 minus 1. Okay. 4.74 minus 1 will be equals to 3.74. 3.74. When you are going to take its log, it will becomes minus 1. So you have to put here minus 1. 4.74 minus 1 will be 3.74. So when you are taking the concentration of acid 10 times higher, then the pH will decrease 1 unit. Remember this, practice this, or when you are going to attempt this question, so you have to give these examples, and these examples are very easy. You can memorize the value of pKa of acetic acid, the value you have to take the increased value of 10 times increased value of, so you can take any of the value instead of 0.1 or 1. But just keep in mind that you have to take salt 10 times larger than the acid, and in the next example you have to take acid 10 times larger or higher than the salt, the amount of acid. So these two are the examples. These are the factors that affect the pH of the buffer solution. So by changing the concentrations, you can get the buffer solution of your own pH. That is your requirement. You can prepare buffer solution basically of your own choice. pOH of buffer I have discussed before that. You can easily change the Henderson-Hasselbalch equation for pOH for a base. The association of bases is the equation of dissociation of a base. You have to write its equilibrium constant expression. Kb is equals to products over reactant. Next is you have to take the log on the both side as we have did for acid. Next you have to take the negative sign on the both side. After that you have to rearrange the Hasselbalch equation we have did yesterday. Same you have to do for the base. Next is you have to take the negative log of OH concentration, negative log of Kb, ionization constant, and log for salt and base. You can derive pOH Henderson equation. You can derive easily the Henderson equation to calculate pOH. If in exam the question is to calculate, derive the Henderson equation to calculate the pOH of buffer solution. So you have to derive in a same way that we have done for acid. It will becomes pOH is equals to pKb, because pKb is the negative log of Kb, pOH is the negative log of concentration of base. You have to arrange whole the equation. Here is the ammonia. This is in a division. On the other side of equation, it will be in a multiplication. Here you can see ammonium ion is in a multiplication with OH negative. On the other side of equation, it will be in a division. In this way, this OH will be separate out
and then you have to take the log, the negative sign on the both side, and the rearrangement. Let's talk about the buffer capacity. What does it mean? What do you think that buffer capacity means? Anyone? Do you have any idea? Manal, Taha, Sabika, Amina. टीचर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। मैं सामने ही लिखा हुआ है। सामने लिखा हुआ है, आपको कोई आइडिया हो रहा है इससे? हम ये पूरा टॉपिक बफर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं ना, बफर सॉल्यूशंस की बात करें तो हम बात करें बफर कैपेसिटी की। तो आपको क्या लगता है कि बफर कैपेसिटी का क्या मतलब होगा? मिस, जो बफर सॉल्यूशन किसी एसिड या बेस के रिएक्शन में डाला जाता है तो वो एसिड या बेस कितना बफर अब्जॉर्ब करते हैं? बेसिकली बफर सॉल्यूशन हम बना रहे हैं एसिड से, या उसका हम कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं, या बेस से या हम उसका कॉन्जुगेट एसिड ले रहे होते हैं, बेसिकली उसका सॉल्ट ले रहे होते हैं। बफर कैपेसिटी मीन्स when you are adding any of the acid or a base externally from the outside in a buffer solution, how much that buffer solution resists the change. The extent of that resistance is called the buffer's capacity. कि किस हद तक एसिड या बेस हम ऐड कर रहे हैं और वो बफर सॉल्यूशन उसे रेजिस्ट कर रहा है, उसमें पीएच में चेंज नहीं आने दे रहा, किस हद तक वो उस एक्सटर्नली एडिशन ऑफ एसिड और बेस को रोक सकता है, उससे पीएच को चेंज होने से बचा सकता है, वो उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम के बफर सॉल्यूशन में 5 और 10 डीएम क्यूब एसिड और बेस डाल रहे हैं और वो बफर सॉल्यूशन उसे रेजिस्ट कर सके या पीएच को चेंज होने से बचा सके, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उस स्पेसिफिक अमाउंट तक एक बफर सॉल्यूशन एक्सटर्नली ऐड होने वाले एसिड या बेस को रेजिस्ट कर सकता है। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि अब बफर में वो कैपेसिटी नहीं रहेगी और हम और एक्स्ट्रा एसिड और बेस ऐड करते रहेंगे तो वो बफर सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब वो सॉल्यूशन या एसिडिक हो जाएगा, एसिड डाल रहे हैं अगर हम, या बेसिक हो जाएगा अगर हम बेस ऐड कर रहे हैं, तो बफर सॉल्यूशन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द बफर्स कैपेसिटी, दैट हाउ मच बफर कैन resist that change. The extent of the capacity of the buffer solution is basically called as the buffer capacity. Now it's clear? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes. So let's talk about that, how we can calculate this and how we can calculate the capacity of the buffer. For example, we are adding 0.01 molar NaOH in 1 dm cube of the buffer solution. We are externally from the outside, we are adding 0.01 molar NaOH. As we know, NaOH is the very strong base. So when we are adding base, then this base have to change the pH of the buffer solution, that how much buffer solution can resist this change, because buffer solution do not maintain the same pH. There is little bit change in the pH when you are adding acid or base, but buffer solution try to resist, try to minimize that change. So let's talk, if we are adding 0.01 molar NaOH in a buffer solution, what will happen? We are adding NaOH. What will happen after the addition of NaOH? When 0.01 moles of NaOH is added in a buffer solution, 1 dm cube of buffer solution, it is 100% dissociated because it is a very strong base. It is a strong electrolyte, and strong electrolytes completely dissociate into its ions. So if it will dissociate into its ion, it will form Na positive ion plus OH negative ion, hydroxyl ion and sodium ion.
only 0.01 moles of CH3 COOH. This is an acid, and here you can see this is a base. OH negative ions are basic. These are the base, so they will react. So there are 0.01 moles of acetic acid that will react with the 0.01 moles of base. Clear? 0.01 moles of OH negative ion will react with the 0.01 moles of the acetic acid. Initially, we are taking 0.09 moles of acetic acid and 0.11 moles of sodium acid. This is our initial concentrations of buffer solution. Salt having a concentration 0.11 molar and acid having a concentration 0.09 molar. These are the initial concentrations. In this initial concentration, we have added 0.01 molar NaOH. इनिशियली हमारे पास एसिटिक एसिड है 0.11 मोलर और एसिटिक सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड है 0.09. हमने उन कंसंट्रेशंस में सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 0.11 मोलर 11 मोल्स बेसिकली मोलर इज मोल्स पर डीएम क्यूब. So 0.11 moles and 0.09 moles of acetic acid. इन कंसंट्रेशंस में हमने ऐड कर दिए हैं 0.01 मोल्स बेस के. ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं बेस के वो 0.01 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि बेस और एसिड जब मिलते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने का मतलब है कि सॉल्ट और वाटर का बनना और सॉल्ट और वाटर का फॉर्म होना पीएच को मेंटेन रख रहा है. तो बेस ऐड करने पर वो बेस के OH नेगेटिव आयंस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगे. बेस हमने 0.01 मोलर डाला है तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन तो ज्यादा है 0.09 है. दैट्स व्हाई ओनली 0.01 मोल्स रिएक्ट करेंगे, सेम कंसंट्रेशंस रिएक्ट करेंगे. सॉल्ट एंड वाटर बन गया. दैट मीन्स बफर सॉल्यूशन की पीएच मेंटेन रही. जो बेस के आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे वो एसिड के साथ रिएक्ट कर गए तो पीएच पर कोई चेंज नहीं आएगा. क्लियर? सो वो उसके इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर गए. जब एसिड के 0.01 मोल्स OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर गए तो पीछे कितने बचेंगे? 0.01 थे. इन 0.09 में से इनिशियली 0.09 थे. इन 0.09 मोल्स में से 0.01 मोल्स यूज हो गए. रिमेनिंग कितने रहे? 0.08. एसिड के 0.01 मोल बेस के साथ रिएक्ट कर चुके हैं. लेफ्ट कितने हैं? 0.08. कीप इन माइंड. नेक्स्ट थिंग इज 0.0 base having 0.01 moles, so 0.01 moles of base will react with the acid and form CH3COONA plus water. ऐसा ही है. जब OH नेगेटिव आयन बेस के NaOH या NaOH डेसोसिएट होगा बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीटली डेसोसिएट होगा. Na पॉजिटिव में डेसोसिएट हो गया और OH नेगेटिव में डेसोसिएट हो गया. ये बेस जो है OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और एसिड के 0.01 मोल्स के साथ रिएक्ट किया जिसकी वजह से एसिड के जो इनिशियल मोल्स थे वो 0.08 हो गए. फॉर्म क्या हुआ है? फॉर्म हो गया है सॉल्ट. सॉल्ट कौन सा? सोडियम एसिटेट. और साथ में क्या फॉर्म हो गया है? वाटर. साथ में क्या फॉर्म हो गया है? वाटर. तो 0.01 मोल एसिड और बेस के रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट के कितने मोल्स बन रहे हैं? सॉल्ट के कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं? 0.01. क्लियर? जितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के वो उतने ही मोल्स प्रोडक्ट के बनाएंगे जब कंप्लीटली रिएक्शन हो जाता है. तो सॉल्ट हमारे पास कितना बन गया? 0.01. दैट्स व्हाई जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी सॉल्ट की दैट इज 0.11. व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड
this 0.01 in it will become 0.12. Initially acid is 0.09 molar and salt is 0.11. When we are adding the base that having a concentration 0.01, this base will change the buffer solution. How it will change? NaOH, OH negative ions reacts with the acid, acetic acid, and form salt and water. Due to the reaction with the acetic acid, the moles of 0.01 moles of acetic acid, from 0.09 moles, it will be consumed and it will become 0.08. 0.01 मोल यूज हो चुके हैं और 0.08 मोल्स रिमेनिंग रह गए हैं. इसी तरह सॉल्ट जब फॉर्म हो गया तो इनिशियली 0.11 मोल्स हैं, तो जब सॉल्ट की फॉर्मेशन हो गई तो इतने मोल्स इनिशियल कंसंट्रेशन में ऐड हो गए. अब आप वैल्यूज पुट कीजिए हेंडरसन इक्वेशन में. नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू इन हेंडरसन इक्वेशन. Here you can see Henderson equation. pH is equals to pKa is equals to plus log salt over acid. pKa of acetic acid is 4.74 as we know it, plus log. Now salt having a concentration 0.12. Initially it was 0.11. After the addition of base it is changed. And acid's concentration is decreased. Initially acid was 0.09. Now by the use of 0.01 moles of acid it becomes 0.08. Calculate from the calculator. It will be log 1.5. Log 1.5 will be equals to 0.176. Add these values, 4.74 plus 0.176, it will becomes 4.92. Here you can see buffer has tried to resist the change. There is little bit change in the pH. So due to the buffer solution, if you are adding externally any acid or a base, there is a very small change in a pH. If there is a no buffer solution, then NaOH can change the pH of the solution, or any, for example, we are taking neutral water. We are talking about neutral water. Neutral water, as we know, having amphoteric nature. It's not a base, it's not a acid, it's neutral, having pH 7. If you are adding base in it, sodium hydroxide, this base is a very strong. This base will change this pH from 7 to 12. Make it basic. 12 pH is very, very high. It is more towards the base. As we know, the scale of the pH, that is 0 to 14. At a 7, there is a neutral nature. Below 7, it's acid, and above 7, it's a base. And 14 is very, very strong base. And 12 is near to the 14, so that's why 12 is also very strong. So in a neutral water, you are going to add sodium hydroxide. It will change the pH. But when we are adding this strong base in a buffer solution, there is a very little bit change in a pH. So buffer solution resists the change in a pH. This is the capacity of the buffer solution. Clear? कोई confusion, कोई doubt? Easy है, topic interesting है. Okay. Next हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की. एग्जाम्पल है आपकी बुक की. अपनी बुक्स खोल लीजिए. बुक की एग्जाम्पल नंबर ओपन योर बुक्स, एग्जाम्पल नंबर 5. ये अब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बिकॉज जो मैंने आपको अभी समझा दी है बफर कैपेसिटी, उसी तरह उन्हें आपने जिस वैल्यूज पुट करनी है. ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 241. बिफोर बफर कैपेसिटी, ये आपका प्रॉब्लम है कंप्लीटली. ये जो है, जो भी हमने डिस्कशन की है बफर कैपेसिटी की, सेम उसी तरह का है जी. आप सबने अपनी बुक्स खोल ली हैं? जी मिस. चले, आपकी बुक के पेज नंबर 241 पर ये एग्जांपल दी हुई है. दैट इज एग्जांपल नंबर 5 नॉट 4.
Okay, calculate the pH of a buffer solution. You have to calculate the pH. वही हेंडरसन इक्वेशन यूज होगी पीएच कैलकुलेट करने के लिए जब बफर सॉल्यूशंस की बात हो रही है. ठीक है, वैसे आपको पता है पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H positive concentration, but when there is a buffer solution तो आपको याद रखना है कि buffer solution की जब pH कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला इज pH is equals to pKa plus log salt over acid. Okay, so don't forget this. Okay, in which 0.11 molar sodium acetate, 0.0109 molar acetic acid, and Ka for acetic acid is 1.8 exponent minus 8. Ka is given, not pKa. Henderson equation में pKa की value add होती है, not Ka. So you have to convert it. How you can change it? As we know that pKa is equals to minus log of Ka. तो आप minus log ले लीजिए कैलकुलेटर से 1.8 एक्सपोनेंट माइनस 5 का. इट विल बिकम्स 4.74. ये वैल्यू तो अब आपको याद भी हो गई होगी कि एसिटिक एसिड की pKa वैल्यू होती है 4.74. नाउ पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन. pKa इज इक्वल्स टू 4.74 log salt over acid. Salt is 0.11 molar और acid is 0.09 molar. Divide these values, take log of the answer, it will be 0.087. Add in a pKa, it will be 4.83. Clear? ये प्रॉब्लम इजी है, समझ आ गया है बच्चों? जी मिस. हो जाएगा. इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इन एग्जाम्पल्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. एग्जाम में आपकी सेम एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं और आपके एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं. तो सारे एग्जाम्पल जो आपके एलपी के सिलेबस में इंक्लूडेड हैं वो सब हमेशा जब भी आपने प्रैक्टिस करनी है चैप्टर की तो वो सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है और उन सारे क्वेश्चंस की. क्लियर है? यस मिस. यस मिस.